आज हम थोरैक्स के मसल और फेसिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थोरैक्स के मसल्स मेनली रिस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ये स्केलेटल मसल होती हैं जो वॉलेंटरी कंट्रोल्स में स्टार्ट करते हैं फेसिया ऑफ थोरैक्स से। सो इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर एंड ऑल्सो सपोर्ट provide to muscles, blood vessels and nerves, and it's it have mainly superficial and deep fascia. So starts with facial fascia. सुपरफिशियल फेसियास का लोकेशन स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एंड इट्स कंपोजिशन इज फैट एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू. सो एंड फंक्शन इज लाइक इट्स allow movement to skin and also insulation and support to blood vessels and nerves. It contains cutaneous nerves and veins like cephalic and basilic and lymphatic and fat cells also. So about deep cell, its location is interior the superficial fascia, and its composition is dense connective tissue and function is protection and support to muscles and organs and also guidance to them. And there is also a specialized fascia, that is pectoral fascia and clavipectoral fascia and endothoracic fascia. सो इट्स मीन लाइक इन सब का मतलब ये हुआ कि थोरैक्स का एक थोरैक्स मेनली मसल्स है जो उसके फेसिया के बारे में अगर देखें तो फेसिया जो है कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो मसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. थोरैक्स मेनली सुपरफिशियल एंड डीप फेसिया होता है. सो सुपरफिशियल फेसिया स्किन के नीचे होता है और ये स्किन को मूवमेंट और इंसुलेशन एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स को सपोर्ट देता है. फैटी एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है. सेम और डीप फेसिया, लाइक डीप फेसिया सुपरफिशियल फेसिया के नीचे होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है एंड मसल्स एंड ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है और गाइड करता है उनके मूवमेंट्स को. स्पेशलाइज फेसिया, पेक्टोरल फेसिया जो पेक्टोरल्स मेजर को कवर करता है. क्लेविपेक्टोरल फेसिया पेक्टोरलिस माइनर एंड सब क्लेवियस मसल्स को इंक्लोज करता है. एंडोथोरेसिक फेसिया थोरैसिक कैविटी और पैराइटल प्लेरा के बीच में एक थिन लेयर होता है. फर्स्ट हम लोग आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद बीडी चौरसिया से लाइन बाय लाइन रीड करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं मसल्स ऑफ द थोरैक्स. एक्सट्रिंसिक मसल्स एंड इंट्रिंसिक मसल, एक्सेसरी मसल. सो एक्सट्रिंसिक मसल वो होते हैं जो बाहर थोरैक्स से बाहर अटैच होते हैं पर इनडायरेक्टली थोरैक्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं. इंट्रिंसिक मसल डायरेक्टली थोरैक्स के मूवमेंट और रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन ये फोर्स ब्रीथिंग के दौरान एक्टिव होते हैं. सो स्टार्ट्स विद एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ थोरैक्स, दैट इज पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सेरेटस एंटेरियर एंड सबक्लेवियस. सो and about intrinsic muscle, there is external intercostal muscle, internal intercostal muscle, innermost intercostal muscle and transverse thoracic subcostal muscle. And accessory muscles are sternocleidomastoid, scalenus, serratus anterior, pectoralis major and minor. During forced inspiration and forced expiration, abdominal muscles, abdominis, external oblique, internal oblique, transversus abdominis, internal intercostal and transversus thoracic. So that's the thing. And clinically it's like pneumothorax, intercostal neuralgia, paradoxus breathing. So न्यूमोथोरैक्स जब प्लूरा डैमेज होता है तो एयर प्लूरा कैविटी में इंटर करता है और लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं. इंटरकोस्टल न्यूरोलैगिया, इंटरकोस्टल नर्व्स की इरिटेशन या कंप्रेशन की वजह से शार्प पेन होती है. पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग, डायफ्राम पैरालिसिस या ट्रॉमा की वजह से एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न डेवलप होता है. सो लास्टली कंक्लूड करें तो थोरैसिक मसल और फेसिया रेस्पिरेशन और चेस्ट वॉल के स्टेबिलिटी के क्रूशियल रोल के लिए क्रूशियल है. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इंस्पिरेशन को असिस्ट करता है. इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल्स एक्सपिरेशंस में हेल्प करते हैं. क्लिनिकल कंडीशंस जैसे न्यूमोथोरैक्स और इंटरकोस्टल न्यूरैलिया इन मसल्स के डिसफंक्शन से जुड़ा होता है. ये लेक्चर MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है. सो आपको और टॉपिक डिटेल्स में चाहिए तो
आगे कमेंट करके बताना। स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। लाइक thorax is covered by muscle of pectoral region upper limb. In addition, the intercostal muscles and membranes fill the gap adjacent ribs and cartilages. These muscles provide integrity to thoracic wall. A right and left pair of thoracic nerve fulfill exact definition of the dermatomes. The posterior intercostal vein, posterior intercostal artery, and intercostal nerves, that's mnemonic is vein, lie from up downward in the costal groove of the limb. Sympathetic part of autonomic nervous system parts starts from the lateral horn of thoracic T1 to T12 segment of spinal cord. It continues up to lumbar 2 segment. Covering of the thoracic wall. Thoracic wall is covered from outside to inside by the following structures: skin, superficial and deep fascia, extrinsic muscle, and extrinsic muscle covering the thorax as follow. Like muscle of the upper limb: pectoralis major, trapezius, serratus anterior, pectoralis minor, latissimus dorsi, levator, scapular, rhomboid major, rhomboid minor, serratus posterior and superior, and serratus posterior inferior. And muscle of the abdomen: rectus abdominis, external oblique, muscle of back, erector spinae. Thoracic wall proper. The thoracic is from the skeletal framework of the wall of the thorax. The gaps between the ribs are called intercostal space. They are filled by the intercostal muscles that contain nerves, vessels, and lymphatics. There are 9 intercostal space anterior and 11 intercostal space posterior. Like 12 ribs joint articulate with thoracic vertebra, but in anteriorly only 7 ribs are articulate with sternum. So it's 9 only because 10 are articulate with the ribs sternum. So intercostal muscles, the external intercostal muscle, internal intercostal muscles, and transverse thoracic muscle, which is divisible into 3 parts, namely subcostalis, interior, the interior, intercostal intimae, the sternocostalis. The attachment of these muscles are given in table 14.1. So it's important to write, like you have to remember the attachment and origin. Extent the external intercostal muscle extends from the tubercle of the rib posteriorly to the costochondral junction anteriorly. Between the costochondral junction and the sternum, it is replaced by external or anterior intercostal membrane. The posterior end of the muscle continues with the posterior fiber of the superior costotransverse ligament. The internal intercostal muscle extends from the lateral border of the sternum to the angle of the rib. Beyond the angle, it becomes continuous with an internal or posterior intercostal membrane, which is continued with the anterior fiber of the superior costotransverse ligament. The subcostalis is confined to the posterior of the lower intercostal space only. The intercostalis intimae is confined the middle 2/4 of the intercostal space. The sternocostal is present between the anterior part of the upper intercostal space. A direction of fiber in the anterior part of the intercostal space, the fiber of the external intercostal muscle run downward, forward, and medially in front. And the fiber of the internal costal runs downward, backward, and laterally. That is at the right angle to those of the external intercostal. The fiber of the transverse thoracic run in the same direction as those of internal intercostals. No supply. All intercostal muscles are supplied by the intercostal nerves of the space in which they lie. Action of the intercostal muscle. The main action of the intercostal muscle is to prevent intercostal space being drawn in during inspiration and bulging outward during expiration. The external intercostals, interchondral portions of the internal intercostals, and the levator costae may elevate the ribs during inspiration. Third, the internal intercostal, except for the interchondral position and transverse thoracic, may depress the rib or cartilage during expiration. So that's the point of the thoracic wall. That's all. External intercostal muscle origin is the lower border of the rib.
above the space, and insertion is outer lip of the upper border of the rib below. Internal intercostal floor of the costal groove of the rib, and insertion is inner lip of the upper border of the rib below. Transverses thoracic subcostalis, inner surface of the rib near the angle is origin, and insertion is inner surface of 2 or 3 ribs below. Intercostalis intimi or innermost intercostal. It's a middle 2/4 of the ridge above the costal group is origin, and insertion is inner lip of the upper border of the rib below. So Sternocostalis is the lower 1/3 of the posterior surface of the body of the sternum, and posterior surface of the xiphoid, and posterior surface of the costal cartilage of the lower 3 or 4 true ribs near the sternum. Its origin and insertion is costal cartilage of second to sixth rib. So that's all the it's about walls of thoracic, and there is van. We will discuss later in the next lecture. So thanks. See you in the next lecture.